Dr. Vidyapith for this invitation. And 5 साल बाद बनस्थली यूनिवर्सिटी में वापस आने का मौका मिला है. So I always found that this environment is so surreal and so soothing for everything. So इस टाइम में particularly वाइफ को बोला था कि आते वक्त एक कुर्ता पैक करके देना. Normally कोई कॉन्फ्रेंस पे ऐसा फर्स्ट टाइम में कोई कुर्ता पहन के आ रहा हूँ, but I really feel good. It's so comfortable like that. And it's comparatively more airy as well, sir. Definitely. और other than that, sorry इस बात के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि first of all, I am more like a student than a teacher. So यहाँ पे faculty development program जब मैंने नाम सुना था, ऐसा ना लगे कि मैं किसी को लेक्चर देने आया हूँ. हाँ, rather I am very much open to learning from you all, and I hope that you are all researchers and faculty, so we are all on the same page, always. And साथ साथ और एक चीज के लिए सॉरी इसलिए है कि कभी भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, नॉर्मली यही आ जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ आवर ओन एडवर्टाइजमेंट थिंग. ऐसा ना लगे कि मैं अपने काम का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. हाँ, बट हालांकि प्रेजेंटेशन का मेन मोटो इस तरीके से डिसाइडेड था कि हाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स आवर वर्क and more towards what and why we are doing some work, what and why we are not going to do certain work. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के दिन पे रिसर्च कोई भी बहुत टाइम है और किसी रिसर्चर के पास ये लग्जरी नहीं होना चाहिए कि मुझे सब काम करना. तो इस मोटो के साथ में प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, तो इसीलिए ऐसा ना लगे कि आई एम एडवर्टाइजिंग माय वर्क और लाइक दैट. सो लेट अस स्टार्ट. एंड आई होप दैट आई कैन स्पीक बाइलिंगुअली, so that is more easier way to interact, Hindi and English. Thank you. So first slide पे जैसे कि देख रहे, this is our main institute building. It's situated in Shivalik Himalaya Valley region. It's in Dehradun, almost in the Dehradun-Haridwar highway. When that we have a 256 acre of campus, and that not almost 1/5 of the size of this Banasthali, but it is situated in the fag end of Rajaji National Park. So apart from few people who are actually the encroachers, so हमारे साथ साथ कुछ leopards, elephants, हाँ ये सब भी रहते हैं, and they are quite annoyed to us. But the area is quite nice and quite good with this campus. Now, this particular lab, CSR के all over 38 laboratories के बीच में, this is one of the laboratories which was started in 1957 in NPL New Delhi and shifted to Dehradun in 1960. At that time, so we are that old. और shifting का major reason ये था कि ONGC headquarter was in Dehradun. So at that time, Professor Keshav Dev Malviya ji ने ये सोचे थे कि there should be a research institute which must cater the requirement of oil industries for downstream refining sector. So that was the major mandate of IIT. So we started working with downstream refining sector, and as the time went on, we started moving towards venturing into the new areas like alternative feedstock processing, renewable energy, catalyst preparations. Similarly, almost 25 years back, biotechnology started over there because it is obviously a question that whenever we talk about biofuel or anything bioenergy, practically then what is bio in that is a big question. Even if we talk about ethanol or biodiesel or anything like that, ultimately it's a chemical, fatty acid methyl ester or an ethanol. And the chemical does not have any life of its own. So in this way,
So in this way, our work actually started. Now, as soon as gradually when we started building up new divisions as well as to cater our need. One good example is that सबसे पहले मैं जब IIT ज्वाइन किया था, I was a part of one division PEACBD बोल के, इतना लंबा नाम है तो 2 साल मुझे खुद ही लगा था कि ये नाम का सीक्वेंस अल्फाबेट सीक्वेंस को याद रखना है। तो क्या था, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन बोल के। बट वो एक टाइम था, इट वाज इन ड्यूरिंग 10th 5-year plan period. I'm talking about 2007 to 2008, 2005 to 2006 period. उस टाइम पे मैं IIT पे ज्वाइन भी नहीं किया था जब ये डिवीजन स्टार्ट हुआ था, बट लॉजिक वाज टू डेवलप अ प्रोसेस नो हाउ फॉर बायोमास बेस्ड टेक्नोलॉजी. नाउ आई शुड नॉट बोस्ट इन एनीथिंग, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आज अगर सारे दुनिया के पास बात हो रहा है कि इथेनॉल चाहिए, बायोडीजल चाहिए, बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में इथेनॉल कोई नया चीज नहीं. इथेनॉल फर्मेंटेशन हैज बीन मास्टर्ड बाय मैनकाइंड ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 5000 years ago. बट वो इथेनॉल से क्या एज ए फ्यूल एंटिटी यूज हो सकता है, it was not mastered very long back. But still it is more than 100 years ago we started working with ethanol as a fuel. अगर देखा जाए, ब्राजील हैज ऑलवेज बीन अ पायनियर. उन्होंने मॉडल ऐसा डेवलप किया था पहले के पहले कि हम फर्स्ट जनरेशन फीडस्टॉक से इथेनॉल बनाएंगे जिससे गाड़ी चला सकते, और वो गाड़ी 100% इथेनॉल से चल सकता है. 100% इथेनॉल मीन्स 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर. What does actually means कि इथेनॉल जब डिस्टिलेशन के बाद एजियोट्रॉप फॉर्म करने के टाइम पे इट फॉर्म्स एट 94.5%, है ना, और उस एजियोट्रॉप के बाद फर्दर उसको 99% डिस्टिल करने के लिए द अमाउंट ऑफ इनपुट एनर्जी गोज इन एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटर्न, वहीं पे सारा खेल स्टार्ट. हम लोग अभी भी 99% इथेनॉल के लिए तरसते, कॉस्ट कभी भी मैचअप नहीं हो रहा है. जितना भी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है वो भी 1G सोर्स से हो रहा है. 2G मैच्योर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज भी उसका कोई कॉस्ट रिटर्न नहीं आ रहा है. ये सबके बाद ये सोचते हम देख रहे हैं कि ब्राजील ने ये चीज तैयार किया कि हम 95% तक इथेनॉल से चलाएंगे और बाकी 5% पानी रहने दें. So their engine is developed with a flexi engine से काम होता है. Now, what is the Indian scenario for that? पहली बात तो है, क्या हम फ्लेक्सी इंजन से काम कर सकते? नहीं कर सकते. आज गाड़ी खरीदने जाएंगे, मारुति के अलावा होंडई हो, महिंद्रा हो, या कोई भी गाड़ी हो, फोर्ड हो, होंडा हो, जो भी गाड़ी है उसका इंजन रेडी नहीं है. तो एक बार इमेजिन करो, आप रिसर्च के टाइम पे इफ यू डेवलप अ टेक्नोलॉजी, इज देयर एनी टेकर ऑफ द टेक्नोलॉजी? इफ देयर इज नो टेकर ऑफ द टेक्नोलॉजी, देन व्हाट्स द फन इन बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी? सो इट्स लाइक अ गेम. एज ए रिसर्चर हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि कहाँ पे हम एंट्री मारेंगे और कहाँ से हमारा एग्जिट होगा, हमारा सक्सेस का चांस कितना है, क्योंकि रिसर्च तो हमेशा ही चलता जा रहा है. मुझे मतलब एक चीज बोलना नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है कभी कभी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड लाइक बेस्ड ऑन दैट इन 2019 1st January हम लोग DFG से अलग होकर we created a new division, material resource efficiency division. Now this is pretty important, material resource efficiency division. And why it is important that when the division was created in 2019, at that time we were almost the first institute in all over Asia
to have a two dedicated division. One is biofuels division, another is material resource efficiency. Even as I'm talking over here today, day before yesterday we had our RC also in formal preparation. A new division is also created, which was, an offshoot of DFD and MRED, that is CCDS, Climate Change and Data Science Division. हाँ, बात ऐसा है कि हम कोई भी डिवीजन क्रिएट करने से पहले वो सोच रहे हैं कि इस डिवीजन का काम क्या होगा, और टू सम एक्सटेंट ये और भी अच्छी बात है कि हम क्या काम ना करके दूसरों के ऊपर इस तरीके से भी बोला जाए। एनीवे, बट सिंस वी आर वन ऑफ द पायनियर डिविजन्स, एंड जब हमने ये डिवीजन क्रिएट किया था, it was even very tough to make people of any higher authority to understand what is material resource efficiency. और ये इसलिए कि भाई आप बायोटेक्नोलॉजी वाले इस डिवीजन पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बायोफ्यूल्स डिवीजन को होना चाहिए, जबकि बायोफ्यूल्स डिवीजन में कोई बायोटेक्नोलॉजी का काम नहीं करते। पहले जो बायोडीजल, एविएशन जेट फ्यूल, वो सारा काम बायोफ्यूल्स डिवीजन पे होता। हमारे इस डिवीजन पे हमारा काम होता था कोई भी रिन्यूएबल कार्बोनेशियस फीडस्टॉक का कन्वर्शन, और कन्वर्शन के दो मेजर रूट में हम करते थे। वन इज हाइड्रोलिसिस रूट, व्हिच इज मोस्टली फॉलोड बाय बायोटेक्नोलॉजी रूट। अनदर इज अ थर्मोकेमिकल रूट, जो जिसके अंदर आप मान लो पायरोलिसिस या अदर प्रोसेसेस है। और ये दोनों एरिया को सपोर्ट करने के लिए we have a sustainability and impact assessment area, जो हमें ये continuously दिखाते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम का circular economy approach, resource efficiency approach, carbon flow approach क्या है, उसका sustainability options क्या है। So with all these things our area works, the division works. So in a way material resource efficiency division, हालांकि थोड़ा माउथफुल नेम लगे भी, इसका काम यही पे है। Time has come, we must realize that what we are doing and why we are doing and what we are trying to tell to the world. As a national R&D institute, IIT का एक अलग पहचान भी है, नाम भी है, वजूद भी है। तो हमने जब कोई डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे इंफॉर्मेशन एकदम हाई मिनिस्ट्री लेवल तक जाते हैं। तो इस डिवीजन बनाने के टाइम पे भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस, डीएसटी, डीबीपी, हर लोगों को ये समझाना पड़ा पहले कि हम ये डिवीजन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट चेंज होना एक आरएनडी के लिए आज के दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेजर मेरा बोलने का मतलब है कि what we are doing, why we are doing. So, थोड़ा बहुत अभी मैं बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एरिया, इस डिवीजन का जो मेन एरिया, वन ऑफ द एरिया, आई एम हेडिंग दैट एरिया। वी आर हैविंग अनदर 3 साइंटिस्ट, one technical officer, one technician, one engineer, and almost maybe around 25 students or students including RA, PhD, project staffs, lab technicians, something like that. So this is what we actually do in our area. Resource efficiency is our main motto with any renewable carbonaceous feeds. If you can look into this slide, you can find I have divided this carbon feedstock into 4 different categories: C3, C5, C6, and C12. If you think of C3, it is actually the source of glycerol. If you think of C5 and C6, I am talking about lignocellulosic or vegetal feedstock. If you look about only C6, it can be a 1G starchy feedstock. If you think of C12, it is a 1G sugary feedstock. Okay. और इसके बाद हमारे ऑब्वियस काम पे ये सारा चीज आते हैं जो सब लोग ही कर रहे हैं,